हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो में आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है कि भाई प्री पेमेंट चार्जेस जो आरबीआई लेता है या बैंक्स लेते हैं जब आप कोई भी लोन क्लोज कराने जाते हैं, तो आरबीआई उसको एलिमिनेट करने की बातें करता है। आरबीआई ने उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला है जिसमें प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स टू इंडिविजुअल बोरोअर्स और एमएसईज एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या बोलता है सर्कुलर, क्या डिटेल्ड गाइडलाइन है, आइए समझते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग टू एमएससी इज इम्पोर्टेंट। जाहिर सी बात है भाई, एमएससी एक इकोनॉमी का बेस होती हैं, बैकबोन होती हैं। उनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। However, Reserve Bank supervisory reviews have indicated divergent practices among regulated entities with regard to levy of foreclosure charges, prepayment penalties in case loans sanctioned to MSEs, which leads to customer grievances and disputes। तो क्या कहते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस जब आप लोन को शेड्यूल से पहले बंद करना चाहते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टीज ये खत्म करने की बातें कर रहे हैं। फर्दर, सर्टेन आरईज हैव बीन फाउंड टू इंक्लूड रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस इन लोन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू डेटर बोरोवर फ्रॉम स्विचिंग ओवर टू अनदर लेंडर, आइदर फॉर अवेलिंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेटर टर्म्स ऑफ सर्विस। की चेंजेस क्या प्रपोज किए गए हैं उस सर्कुलर में। आरई शैल परमिट फोरक्लोजर प्रीपेमेंट ऑफ ऑल फ्लोटिंग रेट लोन सैंक्शनड फॉर पर्पस other than business to individuals with or without obligation, without levying any charges or penalties. RE other than Tier 1 and Tier 2 primary urban cooperative banks and base layer NBFC shall not levy any charges penalties in case of foreclosure prepayment of floating rate loans granted to individual and MSE borrowers with or without co-obligants for business purpose. However, in case of MSE borrowers, these instructions shall be applicable अप टू एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 7.5 करोड़ पर बोरोवर। तो एमएसई में क्या कहता है, 7.5 करोड़ तक ये लिमिट, ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। Above instructions shall be applicable irrespective of the source of fund used for foreclosure, prepayment of loan, whether partial or full। यानी कि आप कैसा भी foreclosure कराएं, partial कराएं, full कराएं। Applicability of above instructions for dual special rate loans will depend whether the loan is fixed or floating at the time of foreclosure or prepayment. In other cases, foreclosure prepayment, if charge shall be as per the board approved policy of REs. However, in such cases, foreclosure charges, prepayment penalties levied by RE shall be based on the outstanding amount in case term loans and sanction limit in case of cash credit and overdraft facility. RE shall permit foreclosure prepayment of loan without stipulating any minimum lock-in period. RE shall not levy any charges, penalties in case where foreclosure prepayment is effected at the time of at the instance of the RE. The applicability or otherwise of foreclosure charges, prepayment penalty shall be appropriately mentioned in the key fact statement for applicable loans and advances. RE shall not levy any charges retrospectively at the time of foreclosure prepayment of loan which were waived by the RE not disclosed in advance to the borrower under any circumstances। किसको इसका फायदा मिलेगा, बोरोवर, इंडिविजुअल एंड एमएससीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के को इम्पैक्ट करेगी ये, बैंक एनबीएफसीज को। एमएससी बोरोवर जिनका 7.5 करोड़ तक का लोन है, सैंक्शन लिमिट है, उनको इसका फायदा मिलेगा। एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, रिवाइज इंस्ट्रक्शंस शैल बी एप्लीकेबल टू द एलिजिबल लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच आर फोरक्लोज्ड ऑन और आफ्टर द डेट टू बी इंडिकेटेड इन द फाइनल सर्कुलर। अभी ड्राफ्ट सर्कुलर है, फाइनल सर्कुलर जब आएगा वो 21 मार्च के बाद आएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। विद द इशू ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द सर्कुलर मास्टर डायरेक्शन मेंशन्ड इन द एनेक्चर shall stand repealed from the effective date of the circular. All the repealed circular shall be deemed to have been enforced during the relevant period prior to the coming into effect of these instructions। कंक्लूजन, बोरोवर्स इस चीज से बहुत बेनिफिट उठाएंगे क्योंकि उनके लिए कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एनकरेजेस फेयर कंपटीशन अमंग लेंडर्स, सपोर्ट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। Please subscribe to our YouTube channel @personaltax to get notified on these